Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor Vibhuti Mishra. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। और सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं मेरी सहयोगी गौरा धवनलाल। Thank you, Vibhuti, and Dr. SP, welcome to the program. Thank you, ma'am. A quick look at the headlines. Benchmark indices maintain momentum for fourth day. Sensex jumps 114 points. Nifty closes above 22,400. RBI asks Kotak Mahindra Bank to stop issuing fresh credit cards and onboarding fresh customers via mobile banking. And gold slips 209 rupees to 70,820 rupees. Silver prices fall by 214 rupees in futures market. लगातार चौथे दिन प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में बढ़त कायम। आज सेंसेक्स में 114 अंकों की तेजी, निफ्टी 22,400 के ऊपर बंद। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने से रोकने के निर्देश दिए। और वायदा बाजार में 209 रुपये की गिरावट के साथ सोने की कीमत 70,820 रुपये पर आई। चांदी की कीमत में 214 रुपये की गिरावट। और सकारात्मक वैश्विक संकेतों और प्रमुख शेयरों में बढ़त के कारण प्रमुख घरेलू सूचकांक आज लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 114.49 अंक या 0.16% बढ़कर 73,853 पर बंद हुए, जबकि निफ्टी 34.40 अंक या 0.15% बढ़कर 22,402 पर बंद हुआ है। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.92% की वृद्धि हुई है, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की वृद्धि हुई। और रुपये का हाल जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये और 32 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 105.83 पर कारोबार कर रहा था। Benchmark indices ended in the green for the fourth consecutive session today, driven by gains in select heavyweights amid broadly positive global cues. The BSE Sensex rose 114.49 points or 0.16% to settle at 73,853, while the Nifty 50 jumped 34.4 points or 0.15% to close at 22,402. From the Sensex basket, JSW Steel, Tata Steel and Power Grid were the major gainers. On the other hand, TCS, Tech Mahindra and Infosys were among the laggards. In the broader market at the BSE, the mid-cap sector jumped 0.92%, while the small-cap sector gained by 0.8%. In sectoral indices at the BSE, the metals sector gained 2.8%, commodities gained 1.6% and the healthcare sector rose 1%. In contrast, the telecommunications sector slipped 1.6%, whereas IT and tech sectors fell 1% each. Dr. SP, fourth consecutive day for the market to end in the green, and we have been seeing periodically, over the past 4 days, different sectors and different areas have been taking a rise. Now, do you think the market
is now set for a correction? Because normally after 4 to 5 days, it does move in towards a little minor correction mode. And secondly, have we factored in the market the crisis happening or the escalation in the Middle East? Yes, our markets are very, very resilient at this juncture because we have the positive trajectory of our fundamentals, our economic indicators starting from the GDP or the IIP numbers or core infrastructure. Our inflation trajectory is also coming down. So despite global headwinds like the geopolitical developments and deepening of the geopolitical developments and uncertainties in the interest rate market, our market is very, very strong and going up. And corrections, as you mentioned, corrections are always for the good health of the markets. Because if the corrections are not happening, means there's something wrong in the market because people buy and then they have to book the profit at some point of time. That's why the markets corrections happen. But the deep corrections are not that much anticipated because markets take corrections because of the global headwinds actually. Okay. Sometimes there are deepening of the geopolitical developments as recently we observed in the Israel and Iran. So that's why markets were going down. And again, with the settlement of that development, markets again took their positions in the higher trajectory. So there is a lot of potential going forward, I would say, because fundamentals like your IIP numbers are going in the much higher trajectory, and your GDP on an average during the last 3 quarters of the last financial year grew at the rate of 8.2%, and anticipation is that our GDP for the current financial year will also grow at around 8%. That is the projection by many national and international organizations that India's fundamentals are very, very strong. And recently IMF has projected a very bright picture of the Indian economy and has increased the GDP growth rate for the last year and for the current year also. And going forward, they are saying that India's growth will remain intact in the next decade. So that is a great thing for the Indian economy, that everybody from the national and international organization is appreciating the fundamentals of the economy and appreciating the trajectory of reforms undertaken during the last many years. So corrections, as you mentioned, are the healthy signs of the markets, and there is no criteria that if the markets are going up for the 3-4 days and the 5th day also the correction is anticipated. That is, I never predict the market. Yes. Right. But the correction can happen anytime. You can't rule out the corrections from the market, and but markets always surprise the people with their strong movements. Absolutely. Yeah. In fact, we'd like to get your understanding of, towards the beginning of this year, they had said that the mid and the small cap may not have a 2023 kind of a surge, and this is the year for large caps. But we have seen that, yes, there was a fall, there was a huge correction in mid and small caps, but they are showing great resilience, they are moving up again. So how do you see this year actually, or for investors, mid and small cap? I think this year is for everyone, not only for some segments. This year is the year for everyone, not only for the small segment of the medium-sized companies or the large conglomerates. Everyone is going to gain from the markets. Like India is for everyone, for every citizen, and our growth trajectory is not made for any segment. We are growing at around 8% or more than 8%. That is for every people of India. Right. That's why the markets is going up. That also for every segment, whether the small or micro or the medium or the large cap. That is the slogan that this year is for the mid cap, I don't believe in such kind of connotations. I believe that if markets are growing, then every share or every segment has to grow in momentum of the market. Right. So that's if India is growing, then every citizen all should grow in momentum of the growth trajectory of Indian economy. Dr. Sharma, भविष्यवाणी तो वाकई बाजार के लिए एक मुश्किल काम है, लेकिन अनुमान भी लगाना ही पड़ता है. बिना अनुमान के फिर लोग निवेश जब करते हैं तो अनुमान लगाते ही हैं. राइट. अब हम आगे खबर बताएंगे, एशिया और यूरोप के बाजार का हाल बताएंगे, यूएस का हाल बताएंगे,
लेकिन जो दिख रहे हैं आमतौर पे, और मध्य पूर्व का जो तनाव है वो जिस तरह से कम हुआ है, थोड़ा सा जो रूस और यूक्रेन का भी है वो थोड़ा सा अभी जो है उसको देख करके हमने देखा कि जो लगातार 4 दिन जो है बढ़त कायम हुई है, उससे पहले एक बड़ी गिरावट थी। तो अगर हम अनुमान लगाएं तो आगे आप क्या देखते हैं? देखिए, मेरा जो अनुमान है कि मैं आशा करता हूं कि ये जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं ये शांत हों और वापस रीइमर्ज ना हो, क्योंकि हम कोरोना से उभरने से पहले ही हम वी आर इम्पैक्टेड बाय द जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अभी हम कोरोना से तो बाहर आए नहीं थे। 2020 के बाद 21 में भी कोरोना ने हिट किया पूरे वर्ल्ड को, और 22 में ये युद्ध शुरू हुए, मतलब फेब्रुअरी से ही शुरू हो गए। उसके बाद वन आफ्टर वन ऐसे चल रहे हैं। तो इनकी शांति की आशा हम करते हैं कि पीस रहे वर्ल्ड में। लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हैं, जो डीपनिंग ऑफ डेवलपमेंट्स जो हम देखते हैं कि वॉलीटिलिटी, कभी थोड़ा शांत होने के बाद फिर कहीं ना कहीं से कुछ खबर उभरती है, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होती है और मार्केट्स उसमें काफी करेक्शंस लेती हैं, जिसमें खास करके जो रिटेलर है जो पैनिक में आता है कि अब पता नहीं क्या होगा, अब युद्ध शुरू हो गया है, अब तो मार्केट्स बहुत तेज गति से डिसेलरेट हो सकती हैं, वो पैनिक में आके अपने आप में आपको लॉस में ले जाता है। ये सबसे बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर होता है कि न्यूज बेस जब वो कई बार मार्केट से निकल जाते हैं तो मार्केट्स अगेन गो अप। तो रिटेलर के लिए एक बहुत ही ये समझदारी का माहौल होना चाहिए कि ये वॉलेटिलिटी, जैसे मैम ने कहा कि ये ईयर किसके लिए है, दिस इज फॉर एवरीवन, बट दिस ईयर विल बी वेरी वेरी वॉलेटाइल। ये बहुत वॉलेटाइल ईयर रहेगा, इसमें उतराव चढ़ाव बहुत रहने की उम्मीद है। इसमें जो मार्केट्स न्यू हाइज भी बनाती रहेंगी, और मैं समझता हूं कि ऐसी अगर डेवलपमेंट्स होती हैं जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, तो मार्केट्स बहुत डीप लोज भी बना सकती हैं आने वाले टाइम में। तो उसको वी कांट रूल आउट। हमें उन चीजों से गुरेज नहीं करना चाहिए, उनकी एक्सेप्टेंस से, कि अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट्स लिंगर करती है, डीपन होती है, तो मार्केट्स में डीप करेक्शंस भी हो सकती हैं, वो रूल आउट नहीं की जा सकती। पर इंडिया के जो फंडामेंटल्स हैं, जो हम बार बार कहते हैं कि हम अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी, not only in the large economies but in the many emerging economies also. G20s में चाहे वो large economies हो या emerging economies हो, we are the fastest moving economy. तो इन फंडामेंटल्स के ऊपर हमारी इकोनॉमी अगले कई डेकेड्स में अच्छे से ग्रो करेगी। लेकिन जब कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है इंटरनेशनली, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वो चाहे फंडामेंटल जितने भी स्ट्रांग हो, तो मार्केट्स उसमें डीप करेक्शंस लेती है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। और उसमें रिटेलर के कॉन्फिडेंस के लिए जरूर कोई ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको उसमें संयम से काम लेना है और अपने आप को जोखिम में डाल के मार्केट में उस तरीके का बिहेव नहीं करना है कि जिसमें आपको लॉस हो जाए। जी, हालांकि आपने तो एक संकेत दे ही दिया है। देखिए, लंबे समय से बाजार की जो बारीक चीजें हैं, जो उन पे आपका ध्यान रहा है, आपकी दखल रही है। अभी का समय थोड़ा बिल्कुल एक विपरीत सा है कि टेंशन है। हमने देखा कि जो मध्य पूर्व का जो तनाव है, उस कारण से थोड़ा स्ट्रेस आ गया, सोने की कीमत में भी और चांदी की कीमत में भी काफी उछाल आया। ये जो अब हमने देखा, पहले बड़ी गिरावट, फिर 4 दिन से सब कुछ ठीक है। अगर हम इन बातों को ध्यान रखते हुए निवेशक को सलाह दें, कुछ बातों का ख्याल करने के लिए बोलें, तो 2-3 खास बातें क्या होंगी आपकी? देखिए, 2-3 खास बातें मेरी ये हैं कि मार्केट्स अभी ऑल टाइम हाई के पास हैं। अगर हम देखें तो 75,000 से ऊपर का मार्केट ने न्यू हाई अभी रिसेंटली बनाया था, जिससे कि अभी थोड़ी सी करेक्शन लेके मार्केट्स जो है 73,800 के आसपास हैं। तो थोड़ा सा हम हाई के पास ही कह सकते हैं। तो इस जंक्चर पे अगर कोई ये सोच के कि मेरे को मार्केट से बहुत बड़े प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है आने वाले टाइम में, तो उसको अभी इस लेवल पे रिटेलर को खास करके फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आना चाहिए। जो बने हुए हैं उनको बने रहना चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स जब कोई करेक्शंस आती हैं तभी लेके आनी चाहिए, और जब करेक्शंस आती हैं, जो इन्वेस्टर बने हुए उनको निकलना भी नहीं चाहिए। मैं कहूंगा कि वो अपना लॉस बुक करके निकल जाएं। तो मार्केट इस समय पे बहुत ही एक ऐसे डेलिकेट पोजीशन पे है जहां पे समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के लिए मैं ये कहूंगा कि उनको अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है, दैट शुड बी इन स्टेप्स। अगर किसी को 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है या
50,000 करना है तो एक ही बार में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट्स करेक्शंस भी लेंगी। तो जब मार्केट्स करेक्शंस लेती हैं, डेसिलरेट होती हैं, उस टाइम पे उनको डिप्स पे बाय करना चाहिए, अगर वो मार्केट में एंटर करना भी चाहते हैं इन लेवल्स पे। एक ही बार में अपना पूरा का पूरा मनी जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसमें उनको पैनिक हो सकता है, क्योंकि मार्केट मान लीजिए करेक्शन ले रही है, तो जब वो देखेंगे उनका जो 50,000 का पोर्टफोलियो 1 लाख का वो 95,000 या 45,000 रह गया, तो उनके लिए पैनिक होगा। रिटेलर का जो बहुत ही मेहनत का पैसा होता है, देयर हार्ड अर्न मनी शुड नॉट बी पुट ऑन स्टेज। Right. So, Dr. SP, this is like, as we spoke, it's a duvidha. It's a dilemma that, when the market is falling, should I get my money? Will it fall further and all? Yes. But just to, paraphrase what you said, and do correct me if I'm wrong, you're saying that it's going to be a volatile year. Yes. The zoom out picture is good if you stay in for the long run, right? Excellent, no problems. But how many of us have the patience, because long run can also become very long or not very long. So you're saying that if it's going to be volatile, book your profits when you get it, right? And stay a little bit in cash so that when the market falls, you have the capacity to pick up some good buys. Is that it? So thoda profit booking. Yes. But also stay in cash. You have very rightly grasped my connotation that if the markets are going up, then you can book your partial profits, not the full profits. You should remain in the market, because your sentiment and your psychological level remains at level that you are in the market. And if the markets are getting the correction, then you should put your money in the low levels, at the dips. And at this juncture, in such a scenario, SIP is the best thing to invest in. I would say that SIP scheme or the system is very good for in such kind of volatility years. That provides the good results to the investors. Good results while keeping you a little more safe, from the winds blowing this and that. Yes. और एशिया और यूरोप के बाजार का हाल जानते हैं। सभी एशियाई शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए। जापान का निक्केई 2.36%, हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 2.16%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.97%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.75% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.62% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। और यूरोपीय बाजार भी आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 0.5%, फ्रांस का कैक 0.37% और जर्मनी का डेक्स 0.30% के ऊपर कारोबार कर रहे थे। A look at the U.S. markets. U.S. stocks ended higher yesterday following positive earnings from top-tier companies. The Dow Jones Industrial Average rose 0.69%, the S&P 500 gained 1.2%, and the Nasdaq Composite jumped 1.59%. So wanting to understand from you, when we talk about robustness in the market, and we know that the Indian market has shown resilience and robustness, but now we're looking at international markets. So somewhere now they're also following their own pattern. They're not so responsive or so trigger happy vis-a-vis global events, because the global events and the global geopolitical situations have been there for quite some time. And the immediate crashing of markets or the immediate, gloom in the atmosphere somewhere, I think, has helped kind of an immunity on an endurable process which has now come in, and global markets are also showing a little robustness. Like the US market or the other markets, I would say they are depending upon the day-to-day events, like if some trajectory of inflation or the numbers of the corporate are happening in the good mode, then markets go up, and if something is going negative, then the markets go down. The overall fundamentals are not that much strong, because those economies are not growing consistently in the higher trajectory. Right. They are facing the slowdown in their GDP numbers. But at the micro level, when they observe some positive development in profits of some company, then the markets make momentum. And next day, if the same thing is not sustained, then the markets again go down. That is happening in the markets of the many advanced economies. But India's market, as you said in the start of this discussion, that market consistently going up in the last 4 years.
is this the time for the correction? So our markets are at a sustainable level. This, as I said, despite so many headwinds, so many geopolitical developments, high interest rates, high inflation, our economy is growing much, much higher as compared with the pre-COVID levels. Right. Right. Number two, our markets are at all-time high, despite so much negative developments at the international arena. So their markets grow in titbits. Our market grew consistently for many years and for many months. You observe the rally from Nifty of 17,000 to 22,000 during the last, I would say, less than 1 year. Right. So we have different fundamentals and we have different story to tell the people and to attract the people from the many economies. You know, sometimes you think that the markets have a heart and a mind and a soul of their own. They're waiting some good news so that at least I can respond in a particular manner. And I think that's... that is happening actually. Right. We move on to our next story. The Reserve Bank of India has directed Kotak Mahindra Bank to seize the issue of fresh credit cards with immediate effect. The Apex Bank has restricted the onboarding of new customers via online and mobile banking channels. According to the RBI press release, these actions are necessitated based on significant concerns arising out of the Reserve Bank's IT examination of the said bank for the years 2022 and 2023 and the continued failure on the part of the bank to address these concerns in a comprehensive and timely manner. It added that for 2 consecutive years, the said bank was assessed to be deficient in its IT risk and information security governance, contrary to requirements under regulatory guidelines. It said that during the subsequent assessments, the bank was found to be significantly non-compliant with the corrective action plans issued by the Reserve Bank for the years 22 and 2023, as the compliances submitted by the said bank were found to be either inadequate, incorrect or not sustained. It further added that the said bank is materially deficient in building necessary operational resilience on account of its failure to build IT systems and controls commensurate with its growth. However, the RBI has allowed the bank to continue to provide services to its existing customers, including its credit card customers. और एक खबर और जहां पढ़ लेते हैं कि अमेरिकी सीनेट ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंधित कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे काफी गंभीरता से ले रहे हैं। यदि ये विधेयक पारित हुआ तो चीन के ऐप बाइट डांस के पास अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए 9 महीने का समय होगा या इस ऐप को अमेरिका में इसके बाद इसमें यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा। जानकार कहते हैं कि इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है। यह विधेयक यूक्रेन, इजराइल और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी साझेदारों के लिए सैन्य सहायता उपलब्ध कराने वाले 4 विधेयकों के भाग के रूप में पारित किया गया था, जिससे 79 सीनेटरों का समर्थन प्राप्त था। We'd like to draw your attention to the earlier story, and that is, when the RBI is stepping in with checks and balances and rigor. I think with everything becoming online and with so many people wanting to come in and, credit cards, online payments, so the rigor somewhere, and it's very important for a growing economy to have safety measures and built-in areas. So in terms of that, how well placed is India to ensure that the final customer is looked after? Yes, I would say that during the last few years after the corona, the regulatory environment is very vigilant actually, whether for the customers or the markets or the other regulatory systems. And we appreciate that with the regulations and awareness of the regulatory department and vigilance of the regulatory department, so many things in India are becoming robust, and the confidence of the people and the consumers and the investors is increasing at the higher and higher level. Right. So when we look at the bank regulatory system, and so in terms of, suppose, any news like this, like we had one bank which we mentioned here, and I think, at different times when regulatory issues come up, and these are big organizations which will, of course, pull up their socks, get their act together, the Indian consumer at any point should really not be worried, because anybody who's reached a particular stature, any bank, government or private banks or even public sector banks, there is a robustness to the system, and this assurance is there? Yes. The investor or the people should not be worried about
such developments because we have a great safety system in our scenario of the economy or the businesses. So that's why the regulatory environment and the other bodies are very, very vigilant and proactive. Right. Particularly in such a scenario of so many uncertainties and globally and very, very volatile economic situation in the world economic system. Right. And the flagging system is also becoming quicker, so that we don't, for years, we don't wait for it. Right. They're picked up immediately. जी, गोरा के ही जो खबर थी उसमें से एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ. ठीक है, कुछ खामियां थी. खामियों के बाद जो है सो आरबीआई ने ये निर्देश जारी किया है. थोड़ी इन आशंकाओं, धारणाओं को थोड़ा साफ कर दीजिए आप कि आगे एक निर्देश है रोक का, लेकिन जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उस क्रेडिट कार्ड के साथ इस बैंक की चर्चा हुई है, क्या उन्हें कहीं से कुछ घबराने या कुछ डरने की बात है? देखिए, मैं ज्यादा, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल फर्म का मामला है, मैं ज्यादा इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग एन इंडस्ट्री बॉडी. बट स्टिल जो रेगुलेटरी डिसीजंस होते हैं, दैट डिसीजंस आर ऑलवेज फॉर द फेवर ऑफ और द बेनिफिट और वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड कंज्यूमर्स एंड द इन्वेस्टर्स. Right. We take a look at the oil prices. Oil price is steadied near $88 a barrel today after rallying in the previous session on a surprise fall in U.S. crude stocks and a drop in business activity in the world's largest oil consumer. Brent crude oil futures were lower at $87.88, whereas Western Texas Intermediate was down at $82.74 when reports last came in. So we have seen that, of course, we are all huge oil consumers also. But wanting to understand from you, oil prices are, inching up. They're going up to what they were at least, a month and a half back, a couple of months. Should we worry? No, we should not worry. Because oil is now decelerating from its recent high. And going forward, as the projections by the IMF and the many organizations that the global growth will decelerate and global growth will be sticky at around 3.2% for many years. Okay. Last year also, current year also, next year also, again next year also. Then again it will decelerate to the level of 3%. So demand trajectory is not that much robust in many countries that will not support the crude oil prices. But we can't rule out the volatility because of the geopolitical developments. If something happens in the Middle East or some geopolitical development deepens, then the prices shoot up. Right. So that volatility will remain, but in the peace times, the prices will dip significantly. Okay. Right. That will make the average of the crude on the basis of the these developments. Right. Yeah. वायदा कारोबार में सोने की कीमत में आज गिरावट रही. अंतिम समाचार मिलने तक सोना 209 रुपये के नुकसान के साथ 70,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं चांदी मई अनुबंध के लिए 214 रुपये के नुकसान के साथ 80,464 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स पर सोना दिन के कारोबार के दौरान 0.57% की सुस्ती के साथ $2,328.70 प्रति ऑन्स पर कारोबार कर रहा था. वहीं अंतर्दिवसीय कारोबार में चांदी भी 0.70% नुकसान के साथ $27.45 प्रति ऑन्स पर कारोबार कर रही थी. A quick, reflection from you. Gold, of course, we've seen correction today in prices, but gold and silver will continue to shine? Yes. I suggest that these corrections must be used for the entry and invest in such kind of, because as I mentioned, global economic scenario will be very, very volatile, and this kind of volatility, gold becomes very, very precious to save your overall investments. Right. That is a great hedge for the overall investments. Well, great. On this glittering note, Dr. SP, thank you so much for coming onto our program. Thank you, ma'am. And now, listeners, look at the headlines. Benchmark indices maintain momentum for fourth day. Sensex jumps 114 points. Nifty closes above 22,400. RBI asks Kotak Mahindra Bank to stop issuing fresh credit cards and onboarding fresh customers via mobile banking. And gold slips to 09 rupees to 70,820 rupees. Silver prices fall by 214 rupees in futures market. And that's it in this program. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.
Market Mantra.